seriously now. So we have another topic that is related to the fire engineering or the fire safety or the fire protection systems in buildings. So it depends on what type of building it is. It might be a high-rise building or it might be a lower height buildings. So the fire safety is very important perspective also in buildings or whatever it is. So fire safety is one of the major consideration that we have to taken into account because we have seen many fire accidents that have been happened in Gujarat itself and in some states. You can be call out the Andhra Pradesh or many states, but the firefighting procedures or the fire safety considerations are not taken into account even after we are having the national fire safety code. So obviously the fire safety and property protection system that we will be discussing about for buildings, obviously it requires a basic knowledge and the understanding of the hazard so as to you can decrease the potentials that may occur the fire in the buildings, or we can save the life and property during the fire. So obviously, so we have some importance of fire safety and we will discussing about the property protection systems for buildings as well. So you all know कि जब भी आपका जब आग लगती है बिल्डिंग्स में, so it makes a chaos in the buildings itself. So the persons who are living there or who are working there or the live persons are there in the buildings, so they just make a chaos when the fire exists, and due to the non-existence of the fire alarms or the fire safety or due to the lack of fire safety or the property protection systems, so the loss of life and property that exists, so it also causes a severe impact on the scenario as well. So obviously you can see that we have some different protection fire protection systems for buildings. So we will discuss it one by one. So first we have the automatic detection. So आपने buildings वगैरह में आपने कभी देखा होगा, उसमें आपके फायर अलार्म लगाए जाते हैं, ठीक है। सो फायर अलार्म क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि अगर कहीं से स्मोक वगैरह आपका मतलब इंड्यूस हो रहा है या कुछ भी वहां से आपका स्मोक बिल्डिंग्स वगैरह में या किसी रूम में या किसी पर्टिकुलर एरिया में, सो दैट स्मोक इट जस्ट सिंथेसाइजेस द that smoke. So the automatic detection system will just consider कि there is a need of a fire alarm. So obviously it just mark it as well. So you can see that automatic fire system alarm. You might have seen this one. So you can see here. So this is the fire detection system. That is the fire alarm you will call it as. So it just induce a smoke, and after the smoke it just counted and just make a alarm itself. So it is very important in the buildings or in everywhere. The fire safety is the plays a very vital part in the buildings itself. So next we have the some locations, so where we have to locate the automatic fire detection system or the automatic fire protection system. So obviously, if I tell you by this installed fire detection system, you can see here that the fire alarm should be in a particular areas where the chances of fires are can take place. So obviously आपका वैसे तो ज़्यादातर आपके जो गैलरीज वगैरह में इसको इंस्टॉल किया जाता है, तो दैट आपका जो स्मोक वगैरह जो है वो उसको इजीली रिड्यूस कर पाए, और आपका रूम्स वगैरह में भी इसको किया जाता है, एक्सेप्ट कि आपका जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह जो बाथरूम होते हैं वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करते हैं. सो some automatic suppression of fires is in buildings also occurs. So we have some National Fire Protection Association. So ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है, जिसको हम इन शॉर्ट एनएफपीए बोलते हैं, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिसाइड करता है या स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन करता है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है. इट जस्ट मेक्स अ डिजाइन पर्पस फॉर द फायर अलार्म और द सिस्टम्स दैट वी हैव. और एक आपका नेशनल बिल्डिंग कोड होता है जिसको हम एनबीसी बोलते हैं. सो नेशनल बिल्डिंग कोड में आपका क्या रहता है कि फायर फाइटिंग से रिलेटेड और फायर सेफ्टी से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो वो आपका हर एक जगह उसको
मतलब आपका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो है दैट शुड बी used. So if I talk about the automatic sprinkler, so you can see here कि जब भी आपकी कहीं पे भी अगर फायर एग्जिस्टेंस होती है या स्मोक वगैरह ज़्यादा एग्जिस्टेंस हो रहा है, सो इन दैट केस इट जस्ट स्प्रिंकल दी वाटर इजिली. यू कैन सी देयर कि जब आपका स्मोक वगैरह होता है, सो उसके बेसिस पे यू कैन सी द किचन हियर एज वेल. सो आपके किचन में भी आपका जो है वाटर स्प्रिंकल हो जाता है जहाँ पे भी आग लगाई जाती है. सो ये जो फायर सप्रेशन सिस्टम जो है ये वहां पे ज्यादा यूज होता है जहां पे मैक्सिमम चांसेस है एक पर्टिकुलर एरिया में आग लगने की. यू कैन सी कि यहाँ पे किचन में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं आग लगने की जहां पे आपका ओवन वगैरह होता है. सो वहां पे ज्यादा आग ना लगे, सो उस स्मोक की वजह से इट जस्ट टेकन इनटू अकाउंट. सो some have the automatic fire suppression system in kitchen as well. So you can see the layout plan here. So आपके यहाँ पे fire sprinkler system यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. So it is the similar case in that buildings as well. Now we have some compartmentation of the building. So compartmentation का meaning क्या है कि हम कुछ आपके जो रूम्स वगैरह जो है उनको एक सेपरेटली डिफाइन करते हैं कि अगर एक कमरे में आग लगे तो वो उस एक कमरे में ही सीमित रहे, वो दूसरे कमरे में आपका एक्सटेंड ना हो, वहां पे मूव ना कर पाए. सो इसलिए इसलिए हम उसको एक कंपार्टमेंट बनाते हैं, सेपरेट कंपार्टमेंट. सो यू कैन सी बाय दिस इमेज एज वेल. ये आपका ये बिल्डिंग है. सो इस कंपार्टमेंट में आग लगी है. सो जो आग जो है वो सिर्फ आपके एक ही कंपार्टमेंट में रहेगी, दूसरे कंपार्टमेंट में स्प्रेड होने से बचेगी. सो बाकी जो कंपार्टमेंट्स आपके हैं वो आपके सेफ रहेंगे. सो नॉर्मली जो हाई राइज बिल्डिंग जो होती है वहां पे क्या होता है कि आपके कंपार्टमेंटेशन वहां पे बहुत कम यूज किया होता है. सो उस केस में आपकी जो आग है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में स्प्रेड हो जाती है. सो इट मेक्स द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एज वेल. सो now the property protection system is also important in buildings, either it may be a high rise building or the low rise building. So you have to consider the fire safety purposes. So आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल करने का जो आपका कॉस्ट जो रहता है, जो इनिशियल कॉस्ट जो होता है, दैट माइट बी मोर, बट इट सेव्स द लाइफ as a result. So obviously life is not more than the money obviously. So आपकी जो life जो है that is very the important part. So you have to save the life. So आपको कई बार कहाँ क्या होता है कि जो कुछ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपकी रिसेंटली गुजरात में जो आपकी एक रिसेंटली आग लगी थी, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे वो दे हैव स्टार्टेड जंपिंग आउट फ्रॉम द top floor. So obviously it was because of the lack of fire safety protection system. So अगर fire safety protection system होता, so we are able to save the many lives. So obviously so fire safety is the most important part. So obviously आपकी जो lives है that are more important than the money. So obviously you have to take this consideration. So now we have the state of the art in designing for fire safety. So obviously we have some considerations. So आपको कुछ साइंस फैक्ट्स वगैरह यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस. सो आपके कुछ कंपनीज वगैरह जो हैं उनका एक डिजाइन क्राइटेरिया होता है या उनके पास कोड्स वगैरह होते हैं. सो उसी के अकॉर्डिंग वो जस्ट मेक अ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. सो if I consider the balance design considerations, so अगर मैं if we have the type of firefighting procedure, so अगर smoke और toxic fume barrier है वहाँ पे, so automatic जो detection system है उसका जो comparativity है वो उसको ज़्यादा that is considered to be ineffective or slightly ineffective. और अगर उसका हम कंपार्टमेंटेशन करते हैं तो वहां पे आप कंसिडर जो है इफेक्टिव रहेगा. सो द टेबल हैज बीन मेड अकॉर्डिंग टू द fire safety functions at the particular area where we require the fire safety procedures. So next we have the how you will define or protect the high rise building. So this is also one of the most important part, that where what are the things that you have to consider while you have to
protect the fire in the high rise building. So obviously आपका जो हाई राइज बिल्डिंग जो होती है जिसकी आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स ज्यादा रहते हैं, सो उस केस में आपका जो फायर फाइटिंग का जो इश्यू रहता है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द लोअर वन. सो ऑब्वियसली आपके वहां पे अगर वहां पे आग वगैरह लग जाती है, सो आग को कंट्रोल करने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वहां पे आप रेस्क्यू का जो ऑपरेशन होता है दैट मेक्स द डिफिकल्ट फॉर द फायर सिस्टम्स एज वेल. सो ऑब्वियसली आपके जो फायर फाइटिंग जो पर्सन्स होते हैं वो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स में दे आर नॉट एबल टू save the lives very easily as compared to the lower buildings. So in this case you can see आपका इसका हाइट काफी ज्यादा है, सो इट हैज नंबर ऑफ फ्लोर्स वी हैव. सो अगर इस केस में अगर कहीं हाई राइज बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, सो अगर वहां पे फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स दे आर नॉट there, so in that case you will not be able to save the lives. And obviously in high rise buildings we have only one system that we have the आपके हाई राइज बिल्डिंग में या तो आपकी लिफ्ट्स वगैरह होंगी, ठीक है, और आपकी जो स्टेयर्स वगैरह जो भी होती हैं वो आपकी वन साइड होती हैं, तो टू साइड नहीं होती कि एक तरफ से आ जा सके और दूसरी तरफ से निकल सके. सो जो आपका जो फायर सेफ्टी का जो कोड जो होता है वो हाई राइज बिल्डिंग्स में ये कंसिडर करता है कि you have to provide a emergency situation staircase. So obviously that staircase should be open only in the case of fires as well. So आपका emergency staircase जो है that should be open separately so that कि आप जो लोग वगैरह जो वहाँ पे हैं, so you can save the lives easily. So some provisions we have in the high rise buildings also. So these are obviously we have already talked about कि आपका जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, और फायर सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट्स है हाई राइज बिल्डिंग्स में एटलीस्ट एक लिफ्ट होनी चाहिए ताकि वो आपकी फायर लिफ्ट की तरह काम करे. जब आपकी आग लगी है सो वो सडनली दैट शुड बी यूज फॉर द फायर लिफ्ट. जैसे मैंने बताया कि स्टेज वगैरह सेपरेट होनी चाहिए, so that is the only one of the stairs. So you can see here at least one staircase should be provided as a fire staircase. So obviously तो नेशनल बिल्डिंग कोड में भी ये मेंशन है कि आपको एटलीस्ट एक स्टेयरकेस जो होनी चाहिए वो फायर स्टेयरकेस होनी चाहिए ताकि यू कैन सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल एज वेल. सो नाउ वी हैव दिस वाटर सप्लाई. सो ऑब्वियसली जब आपका जो पानी वगैरह वहां पे जब आग लग जाती है, सो इन दैट केस द अंडरग्राउंड वहां पे टैंक होना चाहिए ताकि उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख लीटर की होनी चाहिए. सो ऑब्वियसली अगर if somewhere the buildings आपके फायर पकड़ ली है, so in that case sometimes the fire fighting persons takes time to come at the site. So obviously in that particular period the persons who are available there they can fight for the fires as well. So obviously in this case आपका जो पानी की सप्लाई है that should be enough good so that you can turn out the fire. So in that case इन हाई राइज बिल्डिंग्स आपके फायर हाइड्रेंट जो है या फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह जो है दैट शुड बी इंस्टॉल्ड एट एवरी फ्लोर. सो फायर हाइड्रेंट जो है आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है दैट शुड बी इंस्टॉल्ड एट एवरी फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. समटाइम्स आप सबने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा होगा कि बिल्डिंग्स में आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल किए होते हैं बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट अ दे आर वेरी यूज्ड वेरी रेयरली. सो इन दैट केस आपके कुछ फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम से यूज ना करने की वजह से वो खराब भी हो सकते हैं. सो यू हैव टू चेक दी फायर एक्सटिंग्विशर्स periodically so that in case of fires you can able to use it very easily. So now we have the आपके इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, तो आपके जो लिफ्ट का जो इंस्टॉलेशन है या लाइटिंग जो है और जो कॉरिडोर्स वगैरह जो आपके हैं या स्टेज वगैरह जो है, तो उसमें आपका एक्सटर्नल और इंटरनल फायर हाइड्रेंट्स आपके वहां पे होने चाहिए. सो वहां पे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी फायर सेफ्टी. एंड नाउ वी हैव दी अगर आपकी जो बिल्डिंग की हाइट अगर
25 मीटर से ज़्यादा है, दैट अप्रोक्सीमेटली दैट इज द क्लोजली टू द 90 फीट। ओके, सो इन दैट केस आपको जो है एक जनरेटर प्रोवाइड करना चाहिए इन केस ऑफ अगर लाइट चली जाती है। सो ऑब्वियसली जब आपका इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाता है, so you have to provide the you have you must have an option of the diesel generators in that case. So next we have the some requirements of the fire fire resisting high rise building. So in that case, what are the requirements that we should consider in the fire resistant buildings? So so we need to construct the fireproof structures as well. So obviously it might be a bit costly, ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है, but if your building is properly fire safer, is safer or fire resistant, so it makes the lives as well very easily. So in that case, if I use some suitable materials so as to resist a fire, so we have some fire resisting materials as well. तो आपके जो प्रॉपर्टी, जो आपकी फायर रेजिस्टिंग मटेरियल जो है क्या बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, ठीक है। सो बिल्डिंग्स में जो आप जो चीजें यूज कर रहे हैं वो आपकी ज्यादातर फायर रेजिस्टिंग होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं वहां पे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सो ऑब्वियसली आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको फायर रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखनी है। सो फर्स्ट वी हैव दी वो आ, जल्दी टूटना नहीं चाहिए। जब वहां पे जब आग लग जाती है तो वो जो मटेरियल है दैट शुड नॉट इजीली disintegrate under the effect of heat. So this is also one of the important part that we should remember. Then we have the आपका जो है कि अगर वहां पे आग लग गई है, सो वो एक्सपैंड नहीं करना चाहिए मटेरियल। कई बार क्या होता है कि जो मटेरियल है वो आपका फूलना शुरू हो जाता है। सो इन दैट केस आग की वजह से वो फूलना नहीं चाहिए और उससे ब्लास्ट हो सकता है। सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड जो आपका मटेरियल है वो इजीली फायर को कैच ना करे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। एंड ऑल्सो इट शुड नॉट लूज इट्स स्ट्रेंथ when subjected to fire. So obviously आग लगने के बाद उसकी जो strength है that should not be loosened easily. So we have some fire resistant characteristics of common building materials that we use. So obviously there are several materials which are being used in the construction of the buildings. So fire resistant characteristics of these materials are here. So you can see the stone. तो स्टोन आप सबने देखा है, दैट इज ऑब्वियसली, सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ऑब्वियसली बट यू कैन यूज द सैंड स्टोन विद फायर ग्रेन्स, वो आपका आग को इजीली रेजिस्ट कर सकता है, बट वो ज्यादा नहीं करता है, दैट मेक द मॉडरेटली। और आपका जो लाइमस्टोन जो होता है वो बहुत जल्दी क्रम्बल हो जाता है। सो इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द पार्ट एज इज लैक ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल कि आपका वो इजीली टूट जाता है लाइमस्टोन जो होता है। और जो ग्रेनाइट आप यूज करते हैं, जो आप नीचे आप ग्रेनाइट यूज करते हैं, फर्श पे यूज करते हैं, तो वो भी आपका आग में बहुत जल्दी टूट जाता है एक्सेसिव हीट की वजह से। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोर पार्ट। देन आपकी जो ईंट जो होती है, ब्रिक जो होती है, सो ब्रिक जब आपकी प्रोसेस की जाती है चिमनी में, सो वो आपका 1200 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट को वो मतलब रेजिस्ट कर सकता है, बट बियॉन्ड दैट इट कैन make a bad effect. So obviously it start getting disintegrated. So obviously some bricks or good quality mortar bricks that can bind with the mortar as well. So in that case it can improve the fire resistant property of the brick as well. Then timber. So obviously timber तो आपका easily fire को get कर लेगा, बट आप टिम्बर के ऊपर एक केमिकल लेयर आप लगा सकते हैं जो एक फायर रेजिस्टेंट लेयर होती है, सो दैट वो आपका जो फायर को इजीली मतलब आपको कैच ना करे। सो ऑब्वियसली यू कैन सी हियर कि ये आपका एक टिम्बर जो है उसको फायर रेजिस्टिंग बनाने के लिए दैट अ सिमिलर केस आपका बाहर टिम्बर यहाँ पे लगाया गया है। सो इन दैट केस आप देखिए सिर्फ अंदर इसकी आग लगी, जो अंदर सामान है, बट इसके बाहर कोई आग नहीं लगी है। सो ऑब्वियसली दिस फायर विल नॉट स्प्रेड फर्दर। सो you can use some chemicals which are known as the ammonium phosphate and sulfate, boric acid, borax. So these are the some
chemicals which can be coated on the timber. Next we have the concrete. So concrete is also a very good fire resisting material, we can call it as. So obviously the actual behavior of concrete जो आपका रहता है वो डिपेंड करता है कि आपका सीमेंट किस क्वालिटी का है. अगर वो बहुत घटिया क्वालिटी का आप सीमेंट लेके आएंगे, सो इट विल नॉट बी गुड इनफ टू गेट द फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी. सो इन दैट केस यू हैव टू consider a good quality cement to make a concrete. So next we have the steel, but steel is a good conductor of heat. So obviously स्टील जो बात जो आपकी रहती है वो अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो उसकी है, जो खींचने की जो ताकत होती है वो अपनी वो लूज कर देती है एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस. तो यू कैन सी ब्रिक्स का जो टेम्परेचर है वो आपका डबल है एज कंपेयर टू स्टील. सो स्टील का उसका हाफ है, तो 600 डिग्री सेल्सियस पे वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है स्टील, या मोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और इट कैन स्टार्टेड लूजिंग इट्स ऑन स्ट्रेंथ. सो इट कैन कंप्लीटली मेल्ट एट 14 डिग्री सेल्सियस. सो यू कैन सी हियर, तो स्टील जो आपका है वो आपका 14 डिग्री सेल्सियस पे पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट being used as the fire resistance or the fire resisting material. So next we have the glass. So obviously glass is also a poor conductor of heat. So when we expand the glass during heating, so and when it goes down, so it started to get cracking obviously. So in that case the reinforced glass with steel wire is more resistant. So obviously you have to use the रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जो सरिया हम जो यूज करते हैं, तो सरिया आप उसमें ग्लासेस में लगा के, और यू कैन यूज विद द स्टील वायर. तो स्टील वायर कहते हैं पतली पतली जो वायर्स होती हैं स्टील्स की, वो आप उसमें यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन बी वर्क एज द रेजिस्टिंग और फायर रेजिस्टिंग मटेरियल. देन वी हैव द एल्यूमिनियम. सो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम तो इजीली आपका वो डिसिग्नेट हो जाएगा. So obviously it has got high resistance to fire. So obviously आपका it is a great conductor of heat. So next we have the asbestos cement. So asbestos cement is non-combustible material. So obviously that possesses high fire resistance. Now we have the some precautions that we have to take in building construction. So obviously we have already discussed about it, the dimensions of the compartment. So आपको dimension जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी आपका स्टेयर्स यहाँ पे है. तो ये यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे क्यों लगाया गया है, क्योंकि जब आपकी आग लगती है तो आग लगने के बाद ही आप स्टेयर से निकलना स्टार्ट करते हैं. तो स्टेयर से निकलते टाइम ही उसी टाइम आपको सामने फायर एक्सटिंग्विशर दिख जाएगा एग्जिट करते टाइम. सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द most important part, that is the fire safety procedure. Then we have the compartmentation, we have also about it. Then we have fire protection materials, we have discussed about it. Then the exit requirements as per NBC, that is National Building Code of India. So it is also one of the same procedure that we have already discussed. So this is all for the class now. So we have discussed the fire protection procedures or the fire protection requirements for high-rise buildings and the fire safety properties of the high-rise buildings or the building procedure that we have. So